प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रोग्राम के द्वारा आज परमेश्वर आपको बहुत शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। मैं आज आपके साथ बांटना मांगूंगा फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 10वीं आयत से। It says like this in Philippians chapter 2 and verse 10, and it says like this, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth। बाइबल बता रही है कि और हर एक घुटना यीशु मसीह नाम के आगे झुकेगा, जो इस पृथ्वी पे हैं, जो आसमान में और जो इस पृथ्वी के नीचे हैं। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप किस दशा में हैं या आप किस परेशानी में हैं या आप किस पीड़ा से होके जा रहे हैं, पर मुझे एक बात जरूर मालूम है कि अगर आपके साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, अगर आपके नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि ना आसमान में कोई इतनी बड़ी चीज है, ना जमीन में कोई इतनी बड़ी चीज है, ना जमीन के नीचे इतनी बड़ी कोई चीज है जो आपको हरा सके। If you have the name of Jesus in your life, I believe that this name of Jesus will change and transform everything in your life. I completely believe with all my heart। आज जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आपके सिचुएशन के अंदर है, आपकी दशा क्या है, आपके घर की हालत क्या है, मुझे मालूम नहीं आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पर मुझे एक बात जरूर मालूम है कि अगर ये नाम जो सब नामों से आला है, जिसको परमेश्वर ने सर्वोच्च किया है, जिसके नाम को परमेश्वर ने इज्जत दी है, अगर ये आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं दैट यू विल नॉट फेल। बहुत से लोग चाहते हैं कि इनके नाम के आगे किसी और का नाम जुड़ जाए। हम लोग कई बार चाहते हैं, अरे भैया इस पॉलिटिशियन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, इस सेलिब्रिटी का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, अरे इस कॉलेज प्रोफेसर का नाम अगर मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं, अरे यार अगर मेरा नाम इस इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ जाए या इस सेलिब्रिटी या किसी बड़े आदमी के साथ, हम लोग कई बार ये सब चाहते रहते हैं कि हमारा नाम किसी नाम के साथ जुड़ जाए। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका नाम चाहे किसी भी नाम के साथ जुड़ा हो, चाहे किसी भी बड़ी हस्ती के साथ जुड़ा हो, वो हस्ती हो सकता है मिट जाए, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है मिट जाए, जिसके साथ आपने नाम जोड़ा हो वो आपको छोड़ के चला जाए, पर एक बंदा ऐसा है, एक नाम ऐसा है जिसके साथ अगर आप अपने नाम को जोड़ लेंगे तो वो ना आपको कभी छोड़ेगा ना वो आपको कभी त्यागेगा, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। और आज मैं उस यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के बारे में आपसे बयान करने के लिए आया हूं। आज मैं यीशु मसीह की उस सामर्थ के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे मालूम नहीं तुम किस परिस्थिति और किस सिचुएशन से होकर जा रही हो, पर आज मैं इस बात को बताना मांगता हूं, वॉट एवर मे बी योर सिचुएशन, वॉट एवर मे बी योर प्रॉब्लम, इफ यू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द लिविंग सेवियर, एंड इफ योर नेम इज जॉइंड विद दिस नेम दैट इज द नेम ऑफ जीसस, you will not be a failure। Hallelujah। I believe that this name may encourage you। I believe that this name will strengthen you। I believe this name is going to lift you up। मैं आपको परमेश्वर के कलाम से कुछ और जगहों पे लेके जाना मांगूंगा और मैं आपको दिखाना मांगूंगा कि ये नाम क्या बड़े कामों को कर सकता है, ये नाम की क्या शक्ति है। अगर आपके साथ यीशु मसीह का नाम है तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, you are no more an ordinary man। हो सकता है दुनिया आपको ऑर्डिनरी समझ रही हो, but if you have this name of Jesus attached with your personality, I want to tell you that there will be dynamics in your personality। There will be something that the world will not see it, but the people will feel it। I am saying the world will not see it, but the people would feel it। If you have the name of Jesus Christ, the living Savior, attached to your name, the world will not see it। I am saying will not see it, but the world will feel it। The world will be changed through you। The world will be transformed by you because you have this name Jesus। अगर आपके साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है तो हो सकता है ये नाम कोई देख ना पा रहा हो, मगर इस नाम को आपकी पर्सनालिटी के अंदर लोग महसूस कर पाएंगे। जब आप इस नाम को लेके जाएंगे तो इस नाम के साथ आपका नाम जब जुड़ा होगा तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसा डायनेमिक क्रिएट हो जाएगा कि जो आपके साथ बैठेगा वो इस बात को महसूस कर पाएगा कि इस आदमी के अंदर कोई बात तो ऐसी है जो दूसरे लोगों से बिल्कुल भिन्न है, जो दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। People will sit with you and say, what is this man about? When I sit with him I feel so good, when I talk to him I feel so good, when I just listen to him I feel so encouraged। I want to tell you, when the name of Jesus Christ is joined with your name, when you have a personal relationship with this Jesus and you really understand him as a person, this name is going to make a difference in your life। My friend, I want to take you to one verse and I want to show you
something, that what a power is there in the name of Jesus Christ, the living Savior. And I believe that God is going to bless you. मेरे साथ चले प्रेरितों के काम में उसके 3रे अध्याय में और उसकी 6ठी आयत में, Book of Acts chapter 3 and verse 6. I was so blessed, friend. I was so blessed when I read about the power in the name of Jesus. I was just going through the scriptures and it just amazed me. Aren't you glad that we have Jesus Christ, the living Savior, who is with us, who lives with us, and He has given us a name. He said, my friend, you don't even need me to go with you. If you have my name, I am there for my name's sake. He honors His name. He values His name, and He values the man who is called after His name. And I want to show you a few people who were valuable in the sight of the Lord because the name of Jesus was attached with their name. मैं आपको 2 व्यक्ति दिखाना मांगूंगा जिनके नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ था। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि इन 2 व्यक्तियों के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा अपने नाम के निमित्त बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर कोई आदमी, मैं किसी को कहीं भेजूं और मैं बोलूं बेटा जरा उस दुकान पे चले जाना और उनसे बोलना पीटर अंकल ने भेजा है और पीटर अंकल ने बोला है कि ये टॉफी ले आना, तो अगर वो मुझे जानता है और मेरी उसके साथ बहुत अच्छी डीलिंग रही होगी तो वो मेरे नाम से उसे खाली टॉफी दे देगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, दुनिया की सारी शक्ति और सामर्थ्य जो आपके घर के विरोध में काम कर रही हैं, उनकी यीशु मसीह के साथ बहुत लंबी डीलिंग है। जो सक्सेस आपकी रुक गई है, यीशु मसीह जानता है उस सक्सेस को कैसे खोलना है। जो आपकी हेल्थ खराब हो गई है, यीशु मसीह को मालूम है आपकी उस हेल्थ को कैसे सही करना है। जब आप अपनी हेल्थ के विरोध में यीशु मसीह के नाम को बोलते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं शैतान को उस जगह से उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। बिकॉज द हेल्थ इश्यूज नो द नेम ऑफ जीसस, द वेल्थ इश्यूज नो द नेम ऑफ जीसस, द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड नो द नेम ऑफ जीसस। ऑल व्हाट यू नीड इज द नेम ऑफ जीसस। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। नाउ हियर इज द स्टोरी अबाउट 2 men. यहां पर यह स्टोरी 2 व्यक्तियों के बारे में है। यहां पर पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 people whose name was Peter and John, and they were going to the church to pray But as they were going to pray in the church, something happens. On the way, they saw a man who was lame, and this lame was looking to Peter and John, expecting might be Peter and John is going to give them some money so that he can eat food in the night after begging whole day. But listen, Peter and John gave them nothing. They didn't give him a dime. But you know what he said? We want to sure give you something, but not so silver and gold. This man was said, what? You're not going to give me silver and gold. Might be this man is going to give us some food. But even they didn't give them a food. So he thought might be they would give him some clothes. They never even gave them clothes. Neither he gave them food, neither they gave him money, neither they gave him clothes. Then what did they give to him? They gave him the name of Jesus Christ, the living Savior. Think about this. This is so powerful. The book says like this. I want to read this verse. Then Peter said, silver and gold have I none, but such I have give I thee. मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं वो तुमको देना मांगता हूं. And then he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wow. This is amazing. This is wonderful. पतरस ने कहा, यीशु मसीह के नाम से इसी समय तू उठ, खड़ा हो और चल फिर। अरे भैया, जो लंगड़ा आदमी है, जो जिंदगी भर नहीं चला, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसे सोना और चांदी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ 2 टांगे चाहिए जिसपे वो खड़ा होकर चल सके। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर पतरस ने उस दिन उसको सोना और चांदी दे दिया होता तो वो शायद जाके एक वक्त का खाना खा लेता। मगर पतरस ने यीशु मसीह के नाम में उसको वो 2 टांगे दी जिसके ऊपर वो खड़ा होकर रोज जाके कमा सकता है। ना खुद खाएगा, अब वो बहुतों को खिलाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु के लोगों, ये यीशु मसीह का नाम है, ये एक अपाहिज को उठा के खड़ा कर सकता है। द नेम ऑफ जीसस कैन लिफ्ट अप अ लेम and make him walk. I do not know what is your situation. हो सकता आप भी इस आदमी की तरह अपने जीवन के अंदर अपाहिजपन महसूस कर रहे हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मेरी आर्थिक अवस्था बिल्कुल अपाहिज हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल अपाहिज हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा घर बिल्कुल अपाहिज जैसा हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी अब मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। You feel like you're going down the hill. You're feeling like that you would be in the hell. But my friend, I want to
tell you there is power in the name of Jesus Christ the living Savior. आज मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु के लोगों, हो सकता है आपको सब ने छोड़ दिया हो सकता है कोई आज आपके साथ ना हो सकता है सब ने आपको दुख दिया हो, पर मैं आपको बताना मांगता हूं ये यीशु मसीह का नाम आपको खड़ा कर सकता है. This name of Jesus can come in your life. I want to right now speak to whosoever is listening to me by this medium of television or internet, wherever you're watching this program. I want to say in the name of Jesus, my dear friend, I pray that your weakness may leave you right now. If you are sick in your room, I command in the name of Jesus, rise up and walk right now. Rise up and walk right now. In the name of Jesus, I say, may the eyesight be recovered right now. I pray in the mighty name of Jesus. If your heart is broken, may your heart be healed in the name of Jesus. I say, rise up in the name of Jesus and be strong wherever you are, because I believe that name of Jesus can change you. I believe this name of Jesus can transform you. मेरे भाई, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि इस समय आप जहां कहीं भी हैं, आप यीशु मसीह का नाम पुकार के बोले कि ये बीमारी आपको छोड़ के चली जाए. I say that in the name of Jesus, let the disease leave you. I say in the name of Jesus, let the financial problem leave you. I say in the name of Jesus, may you be whole and complete. Hallelujah. I'm excited when I'm talking to you, because I believe it is nothing else but the name of Jesus, the living Savior, that can change and transform everything. Come with me to the book of 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. आप सोच सकते हैं, आप might be you are thinking that, pastor, it's all right, it is for the Christian people. Might be, they are holy people. The name of Jesus works in their life, but not in my life. The name of Jesus won't work in my life. I want to tell you, my friend, if you believe in the name of Lord Jesus Christ, the Savior, this name has such an amazing power. It can transform and change everything for you, even when you are just watching this program. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11 is an amazing verse, and I want to share it with you. It says like this, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified. Ye are washed, you are sanctified, you are justified. If somebody is sitting next to you, say it to him, you are washed, you are sanctified, you are justified. You know why you are sanctified? Do you know why you are justified? Do you know why you are washed? If you are washed, that means you were dirty. If you are sanctified, that means you were a sinner. If you are justified, that means the cause of the problem has been done away and now you are a new man. Hallelujah. I do not know if you think that you are such a big sinner that the blood of Jesus can wash you. I want to tell you, it's a trap of devil. The blood of Jesus can wash you now, in this hour, in this time. आप हो सकता है कह रहे हो कि मैं बड़ा पापी आदमी हूं, मैंने बहुत गलत काम किए हैं और मेरे लाइफ अब बिल्कुल बेकार हो गया है, मैं ड्रग्स में रहा हूं, मैं प्रोस्टिट्यूशन में रहा हूं, या मैं प्रोस्टिट्यूशन में रही हूं, मैंने बहुत गंदी बातें करी हैं, मेरा लाइफ अब कुछ भी नहीं हो सकता है. My dear friend, I am talking to you through the medium of this television, and I am telling you, my friend, that you don't need to end your life. आपको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपने लाइफ में बहुत गलत चॉइसेस करी हो, और हो सकता है आपकी गलत चॉइसेस की वजह से आज आपकी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है और आज बर्बाद होने पे है. मगर मैं आपको आज बताना मांगता हूं, हो सकता है आपको सबने त्याग दिया है मेरे भाई मेरी बहन, पर परमेश्वर का कलाम इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको साफ करता है. नहीं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको साफ करता है, पर प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको आजाद करता है. नहीं सिर्फ आपका प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको आजाद करता है, मगर प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको स्थिर करता है और स्थापित करता है. मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह खाली आपको धोने के लिए नहीं आया है, आपको साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नहीं आया है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको स्थिर बनाने के लिए और स्थापित करने के लिए आया है कि जहां कहीं पर भी आप जाएं, you may be known as a justified and established man in your life. God wants your business to be established. God wants your personal life to be established. God does not want you to live in sin and remain in sin. I want to tell you that God wants you to be out of your sin. God has justified you. God has completely washed away your sin. All what you need is the name of Jesus. You need the name of Jesus in your life. I believe as you're going to call upon this name, Jesus is going to justify you. Jesus is going to establish you, and Jesus is going to make you strong. My dear friend, this is the word of God. I don't know whom am I talking to. हो सकता है आपके दुनिया में बहुत बड़े-बड़े आपने पाप कर दिए हो, मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, कोई
ऐसा पाप नहीं है जो यीशु मसीह दूर ना कर सके मेरे भाई। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो यीशु मसीह धो ना सके, और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है आपके जीवन में जो यीशु मसीह सही ना कर सके। आपकी कौन सी ऐसी परिस्थिति जो आपको लगता है जो यीशु मसीह सही नहीं कर सकता है? मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह आपकी सब परिस्थितियां सही कर सकता है, क्योंकि बाइबल बता रही है ना तो पृथ्वी में कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके आगे घुटना ना टेका जाएगा, जो यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना ना टेकेगी, ना पाताल में कोई इतनी गहरी चीज है, इतनी बड़ी चीज है जो यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकेगी, ना स्वर्ग में कोई इतनी बड़ी चीज है जो यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना ना टेकेगी। मैं बताना मांगता हूं, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम के आगे उसको घुटना टेकना पड़ेगा। चाहे वो पैसे की दिक्कत क्यों ना हो, उसे यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकना पड़ेगा। बिकॉज आई बिलीव दैट दिस नेम इज सो पावरफुल, दिस नेम इज सो पावरफुल दैट नो demon spirits can even stand against it, no powers can stand against it. I want to show you something very more, I want to just take you a little bit further, and I want to show you that the name of Jesus is powerful for the remission of the sins. Book of Acts chapter 2 and verse 38, it says like this: Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Christ Jesus for the remission of sins. इसका मतलब जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पापों को माफ किया जाता है। If you are the person you feel as a sinner, I would call you and I would say, my dear friend, it is the time to do away with your sin. I don't know what sins you have done in your life, but I know for sure that Jesus Christ came and he died for you on the cross, and he paid the price for you on the cross. And if you will give your life to Jesus right now and be baptized in the name of Jesus right now, Jesus is going to forgive your sins, and the peace that has not been there in your heart for a very long time, it will come right now. Might be you are a good businessman, but you don't have peace in your heart. Might be you are a very good engineer or a doctor and you're looking to this program, but you have no joy in your heart. I want to tell you, my friend, joy never comes from money. Joy never comes from the accomplishments. The real joy comes when God gives it to you. You have lots of money, you have lots of finances, you have everything in the world that you want, but what you need at this moment is not some more money and not some more accomplishments. What you need right now is some of Jesus, and I believe that the sum of Jesus may become everything in your life. You want Jesus in your life, it is the Jesus who will give you the grace. It is this Jesus who is going to bring comfort in your heart. I want to pray this prayer over your life, that may Jesus fill your life. May Jesus flood your life with his presence, and that your life may never remain the same again. That your life may never remain the same again. I want to tell you, friends, that when the blind people came to this Jesus, Jesus healed the blind eyes. जब ये अंधे यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने इन अंधों की आंखें खोल दी। जब ये गूंगे यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जबान को खोल दिया। जब लंगड़ा यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के पास आया तो लंगड़ा यीशु मसीह के नाम में चलने लगा। I want to tell you, there is nothing too big that the name of Jesus cannot do for you. I don't know what situation you are in today, but I know for sure that the name of Jesus can change and transform everything for you. I want to just quickly take you into a few verses, and I'm going to show what the name of Jesus in the Bible shows can do. Book of John chapter 20 and verse 31. यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 31वां है. It is so beautiful. It says like this: But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. That means there is life. There is life in the name of Jesus. यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम में जीवन है. You want life, you must have the name of Jesus. I want to take you to the book of Mark chapter 9 and verse 29. मरकुस की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 39th verse में it says like this: But Jesus said, Forbid him not, for there is no one which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. There were people who were doing miracles in the name of Jesus. That means the name of Jesus does miracles. So the name of Jesus brings life. The name of Jesus does miracle. Acts chapter 2 and verse 38, it says like this, that the name of Jesus takes away the sin. Acts chapter 3 and verse 6, it says that the name of Jesus helped the lame man to walk. Acts chapter 4 and verse 10, it is so powerful. It says like this, but it
be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. That means the name of Jesus doesn't heal 199% or 99.9%, but he makes the person whole. That means he does miracle, he heals the person, he completes the miracle, and he gives the forgiveness of the sins. Acts chapter 4 verse 30, it says like this, that the miracles and healing may take place in the name of Jesus. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11, it says, saints are sanctified by the name of Jesus. Ephesians chapter 5 and verse 20 says that give thanks in the name of Jesus. Philippians chapter 2 and verse 10 says every knee must bow at the name of Jesus. Colossians chapter 3 and verse 17 says do everything in the name of Jesus. 2 Thessalonians chapter 1 and verse 12 says you should glorify the name of Jesus. 1 John chapter 3 and verse 23 says go and preach in the name of Jesus. I love it. The name of Jesus heals. The name of Jesus does the miracles. The name of Jesus makes the body whole and complete. The name of Jesus takes away the sin. The name of Jesus makes every knee of hell to bow down before him. The name of Jesus is the biggest name. The name of Jesus is for you to be glorified in your life. Hallelujah. You need to glorify his name through your life. Amen. I believe it. This is the name of Jesus. My friend, I'm going to pray for you in the name of Jesus, and I believe that the sickness is going to leave you in the name of Jesus, even as you're going to look to this program. I do not know who you are, and you are watching the program in which place of Karnataka or which place of India or out of India, but I know for sure that this name of Jesus can make you whole. This name of Jesus can take your sins away. This name of Jesus can make you complete. This name of Jesus can bring the miracles. This name of Jesus can take away your sickness. This name of Jesus is more valuable than silver and gold. I do not know who you are, but you know the name of Jesus. You have been away from the name of Jesus. Today you have heard the name of Jesus. Would you come to Jesus and say, Jesus, come in my life? If you are that person and you want this name, the name that heals, the name that lifts you up, the name that transforms you, the name that changes you, the name that begins great work into your life, the names before which the heaven bow down, the earth bow down, and things under the earth bow down. If you want this name, I am going to pray for you right now, and I will believe that the anointing of God is going to flow through this camera, even into your room where you're sitting, and I believe that cursed disease in Jesus' name will have to leave you. I believe that cursed financial problem will have to leave you right now in Jesus' name. I'm going to pray for you right now. And I'm believing for a great miracle in your life. Are you ready for this miracle? I'm going to pray for you right now, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and Savior. Lord, I believe that this person who is watching the television program, Lord, if he's lame, I command in the name of Jesus, leave your wheelchair, come out in the name of Jesus right now. May there be healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, the person who cannot see, but he has been hearing my voice, I pray in the name of Jesus, may the eardrum be open right now in the name of Jesus. I pray the miracles may take place even through this television screen in the name of Jesus. Oh, there is somebody in your house and he is demon spirit possessed. I command in the name of Jesus that the demon spirits may leave him right now in the name of Jesus. Right now, I command in the name of Jesus. May the marriage be made whole in the name of Jesus right now. Right now, I say come out in the name of Jesus. Every drug addiction, right now, come out in the name of Jesus. The spirit of prostitution, right now I command in the name of Jesus, that boy who has been going into the wrong direction, right now may he be healed in the name of Jesus. I speak anointing, I speak power in the name of Jesus right now. Lord, I believe it that you're listening to my prayers right now and there's deliverance. I believe it. I declare healing upon this person right now in the name of Jesus. I declare that you are healed in the name of Jesus. I declare your financial problem has left you right now. I declare your marriage has become all right now. I declare it right now. The health has become all right now. In Jesus' name, I speak anointing and power. I say, God, bless them, heal them, and transform them. In Jesus' name, amen. I believe it, that God has done some miracle right now in your house. Whosoever you are,
Just experience that in your body. God has just healed you immensely right now, right now. Just give us a call and tell us what God has done into your life. I believe, my friend, that Jesus' power, the name itself, which is so powerful. When I was speaking this name, I just felt in my spirit that somebody just got out of the wheelchair and God has given you the power. I want you to call us and tell us what God has done in your life right now. Right now, I want you to tell me that what has left you. You might be feeling very heavy in your body, but as I was praying, Jesus touched you and healed you. हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने जिस्म में बहुत भारीपन सा महसूस कर रहा था, मगर जैसे ही मैंने आपके लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने आपको चंगा किया. You just give us a call right now, immediately, and we're going to pray for you. If you have watched this whole program and you want us to pray for you, friends, the numbers are on the screen. I want you to call this number now because there is anointing, there is power, and we are going to pray for you. And I believe a miracle will take place. I don't know where you're watching this program, but I want to tell you, we worship in Bangalore, in Kanakanagar. We worship in Bangalore and we worship in Kanakanagar. हम बैंगलोर में और कनकानगर में इबादत करते हैं. और अगर आपके पास बीमारियां हैं और समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, एड्रेस इस समय स्क्रीन पे है. प्लीज इस एड्रेस को देखिए. द एड्रेस इज ऑन द स्क्रीन. टेक दिस एड्रेस. वी वर्शिप एट शार्प 15th 18th क्रॉस, Kankanagar, Arinagar, Bangalore. And I want you to come and be a part with us in our services. Every Tuesday, we have a Bible study. It is powerful. Every Tuesday at 8 o'clock in the evening, practically in the night, we have this service. I want you to come and join in this service. It's going to be a blessing for you. Every Thursday at 7 o'clock, we pray for our city. We pray for the sick people and we speak the word of God. I want you to be a part of it. If you want to come on Tuesday or you want to come on Thursday, so Tuesday at 8 o'clock, Thursday at 7 o'clock, and every Sunday 10 o'clock, we worship in Kankanagar. One more thing. Every Saturday at 4 o'clock, we have KFC. It's powerful. You know what's KFC? KFC is Kids for Christ. The Sunday school children are just growing up, and I'm going to bring up a special program in days to come, and you would see it कि किस तरीके से परमेश्वर बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर काम कर रहा है. You would hear their testimony. You will love it, my friend, and you will be so blessed. I want you to come to Assembly of Believers Church. अगर आप कहीं church नहीं जाते हैं and you are searching for a church, please come to Assembly of Believers Church in Kankanagar. We will pastor you and you're going to be blessed. If you like our programs, please let us know and encourage us. Thank you for standing with us and being with us. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इनसे आपको बहुत बरकत मिल रही है. That is the reason we are existing. Yeah, now one more important announcement I want to share, and we are already running out of time. 27th of September, we are going to have Women's Awakening in Kankanagar, 18th Cross. And I believe that this Women's Awakening is going to be a great blessing. You remember last year we had the Women's Awakening meeting and the Women's Awakening meeting was powerful. और मैं चाहता हूं कि इस बार की Women's Awakening meeting में कम से कम 150 स्त्रियां participate करें. I want 150 ladies from Bangalore to participate in this Women's Awakening meeting. I believe ये सारी स्त्रियां जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी बहुत ब्लेस्ड होंगी. आई वांट यू टू कम एंड सी व्हाट गॉड इज डूइंग सो दैट गॉड कैन बी ग्लोरिफाइड थ्रू योर लाइफ, इन योर हाउसेस, इन योर बिजनेस. मे गॉड ब्लेस यू. कीप वॉचिंग पावर ऑफ गॉड.